Welcome to Rua Perfect classes. In this class, I will discuss about computer organization and architecture related topic. Today we will discuss topic basic computer, machine instructions, and addressing modes. First, I will discuss about basic computer operations. You can see here, this is our input, this is our storage unit, and this is our output unit. This is input unit. Now here control unit, arithmetic logical unit, arithmetical logical unit connected with storage unit, control unit connected with ALU, and input unit connected with control unit also connected with the output unit. And this is called CPU, central processing unit. Listen carefully. What is this is a architecture of computer. You can say basic operations of computer. What types of operations a computer perform? First of all, we give instruction through the input unit. Like, you can say, we have input unit keyboard, your mouse, scanner, etc. User give the instruction through these input devices, and that instruction goes into storage unit, and this storage unit is also known as memory unit. And in memory unit, further it is divided into through two parts: RAM, ROM, or you can say hard disk. It means we can say that memory unit is further divided into two mainly parts: primary and secondary unit. And primary unit further divided primary unit in two parts: RAM and ROM. And secondary unit, that is also further divided in two parts, that is sorry, many parts: hard disk, floppy disk, optical disk, compact disk, flash card, pen drive, etc. It means primary unit divided in two parts, sorry, memory unit divided in two parts: primary unit and secondary unit. And this unit is
joined with the arithmetical logical unit, and arithmetical logical unit joined with the control unit. When any user give instruction to computer through the keyboard mouse, that instruction first of all goes into storage unit. After that, that information goes into control unit, and then that information goes into arithmetical logical unit. If you want to implement their arithmetically plus minus multiplication or logically less than greater than any in operation, that information goes into arithmetical logical unit, and after solving problem it goes return to the control unit, where it controlled by control unit all informations, all instructions, and then that information gives the result to the return to memory unit, and memory unit gives that information return to output unit, or either it give to storage unit, or it gives to output unit directly. If there is no any operations plus minus multiplication less than it greater than, then it goes into directly output unit, and it gives you result through the screen, that known as monitor or printer, etc. I again repeat all these things. First, we have given input. Input, what is input? This is the process of entering data and program into the computer system. It is an electronic machine like any other machine which takes as inputs raw data and performs some processing, giving out processed data. So, we can say input unit which takes data to the computer in an organized way for processing. Second, storage unit, the process of saving data and instructions permanently, that is called storage. Data which has to be fed into the system before actual processing starts, because processing speed of central processing unit is so fast, and that's reason data has to be provided to CPU with the same speed. So data is first stored in the storage unit for faster access and processing, and this storage unit or primary storage of the computer system, which is designed to do above functionality. It provides space for storing data and instructions, and storage unit performs major functions like all data and instructions which are stored here before and after processing. Intermediate results of processing are also stored here. Third one, processing. What is processing? It is performing operations like arithmetic, logical operation, that is called processing. Central processing unit, that is known as CPU, which takes data, instructions from storage unit and makes all sorts of calculations which are based on the instructions given and the type of data provided. It is then sent back to the storage unit. Next one is output. This is the process of producing results from the data for getting useful information. Similarly, output produced by the computer after processing must also be kept somewhere inside the computer before given in the human readable form. Again, we can say output is also stored inside the computer for the further processing. Next one is control unit. Control unit means it controlling of all types of operations like input, processing, output, which are performed by the control unit.
and it takes care of step by step processing of all operations in the computer. Machine instructions. Now I am going to discuss about next topic, that is our machine instructions. Machine instructions. The instruction set can be differentiated by first is operations which are performed by CPU, operation storage in the CPU. Second, operation location where all operations are performed. Third one, numbers of explicit operands per instructions. Like if you want to add two numbers 7 plus 3 that is equal to 10, these numbers are called operands and this is the operations. And last, sorry, fourth, operations. Operation is plus, minus, multiplication, less than, greater than, equal to, etc. And fifth machine instruction is what will be the size, what will be the type of operands, like integer, float. Integer means without decimal values, float means with decimal values, characters, A, B, C, strings, Aman, Raman, etc. Now, next, machine type. There are mainly three types of machine. First, stack. Second, accumulator. Accumulator. And third one is set of registers. Now, what is stack? Stack means here operands are implicitly on top of the stack. That like you can say this is the stack A, B, C, D. These are the operands and these are implicitly on the top of stack. An accumulator, one operand is implicitly accumulator. Set of register means all operands are explicit either registers or memory locations. All machines use a general purpose architecture. Which type of architecture all machines use? General purpose architecture, because registers are faster than memory. Second, easier for a compiler to use. Third one, used more effectively. More effectively. You should keep in mind all these things. First, what are the machine instructions? Machine instructions uh, divided into five parts. First, operand storage in the CPU. Second, number of explicit operands per instruction. Third, operand location. Fourth, operations.
fifth, type and size of operands. The type of internal storage in CPU is the most basic differentiation. Machine type, there are three type of machines: stack, accumulator, set of registers. What is stack? Here operands are implicitly on the top of stack. Accumulator, one operand is implicitly the accumulator, but means one operand at a time will be ins- uh, ins- insert in accumulator. Set of registers, all operands are explicit, either registers or memory locations. All machines use general purpose architecture because registers are faster than memory, easier for a compiler to use, and used more effectively. Now, what are the advantages and disadvantages of machine? Each class of machine. Advantages: stack, accumulator. Third one is register. What is the advantage of stack? This is simple model of expression evaluation. Second, code, good code density, means in stack good code density. Accumulator, it minimizes internal state of machine. Second, short distance. Register, it is most general mod, model for code generation. Now its disadvantages: stack, it can't randomly accessed, can't randomly accessed. It makes it difficult to generate efficient code. Difficult to generate efficient code. Disadvantages of accumulator: because accumulator is only temporary storage, memory traffic memory traffic is very high. Third one, all operands all operands must be named and leading to longer instructions.
These are the advantages and disadvantages of machine type. Now next is classification of classification of general purpose general purpose register machines. There are two major instruction set characteristics which divide the general purpose register architecture. First one is whether an arithmetical logical instruction unit ALU instruction has two or three operands. Like if you want to add, then we will take three register R3, R1, comma R2, or you can add, use add R1, comma R2. Here R3, in this reverse arrow symbol represent that when we add two numbers through two register R1 plus R2, after adding that number will be goes into R3 register, and we will represent like this. And in this case, if we do not want to take a third register, then we will do like this. R1 is to R1 plus R2, means both number add, and after adding that number will be goes into R1 register, first register. Second characteristics, how many of the operands may be memory addressed in ALU instruction. First register to register. In this we will do load and store like this. Add R3, comma R1, comma R2. Here we take R3 for output, R1 plus R2 for input. For example, we'll take in R1 50 and in R2 100. After adding this number will goes into R3. What will value will be stored in R3? 100. Second type, register to memory. Register to memory. Like add R1, comma A. It means in A is operand
operand A is stored into R1 register. R1 plus A. Third type, memory to memory. There is no register. Memory to memory. Like add C comma A comma B. Here C for output and A plus B for input. Now next topic I will discuss, that is types of instructions. There are mainly four types of instructions. First is zero address instructions. Second type, one address instructions. Third type, two address instructions. Two address instructions. And fourth type, three address instructions. Okay. Now first type is zero. Zero address instructions. Zero address instructions means in this all data are directly handled from internal stack based organization like push A. It means push value A in stack like this. Add the top two most elements from stack and return results back in the stack. Means, for example, this is your stack A, B, C. Now instruction is add topmost elements. Topmost elements, these two are the topmost elements, C then B. We have to add and put into return result back in the stack. That means B plus C. Now next, pop. Pop means pop the most topmost element from the stack like this: A, B, C, D.
When we take this D here, that is known as pop-up, pop element. And when we have given A, we insert this A in this stack, that is known as push. Okay. Now second type is one address instruction. One address instruction. In this data transfer instructions that copy the content from one register or memory into another register or memory, means one register or one memory to data transfer other register or other memory. It means one byte instruction send, or we use for this move next one arithmetical logical instructions without the ending letter I are one byte instruction. This is one. Second point, arithmetical logical ALU instructions and are also one byte instruction. And example we use add, sub, ORA, ANA, INR, DCR. Add means plus, minus, or, logical and, increment, increment, decrement. And third type, to address instructions. In to address instruction we use to byte instruction. First byte instruction for OP code and second byte instruction for either for data or address. Like example move MBI B comma 5. It means move 5 to register B. MBI means move this value to this register B.
IN01 read data at port B. These instructions these instructions are generally represented three letters with ending letter I. Example: MBI, ADI, ANI, ORI. Exception: LXI. Instructions. Next, fourth, three address instructions. Instructions that load 16 bits data. 16 bits data or refer to 16-bit memory address, and these are three byte instructions. Example: LXI H, 2400 H. This line means LXI means load H L H to L pair with 2400 H. LDA means LDA 2500 H means get the content of the memory 2500 H into accumulator. Okay, I will repeat all these things in Hindi so that you can revise. इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि बेसिक कंप्यूटर मशीन इंस्ट्रक्शन और ड्रेसिंग मोड्स होते क्या हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में. हमारे पास एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर इनपुट यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. इनपुट यूनिट क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर. इससे यूजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को. वो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज यूनिट के पास जाती है, स्टोरेज यूनिट के से वहां से इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, चेक करता है कि क्या करना है उसके ऊपर. फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कुछ करना है तो फिर वो एएलयू के पास भेजता है उस इंस्ट्रक्शन को, और रिटर्न फिर रिस्पॉन्स कंट्रोल यूनिट के पास आता है. या तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मेमोरी यूनिट में जाएगी, स्टोरेज यूनिट में, या फिर वो डायरेक्ट आउटपुट यूनिट के पास जाएगी और उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिल जाएगा. स्टोरेज यूनिट भी फर्दर टू पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट. प्राइमरी यूनिट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैम और रोम में. रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है. रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है. और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपके सीडी, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव्स वगैरह एटसेट्रा, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है.
और आउटपुट यूनिट आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी लेनी है तो मॉनिटर हो गया, प्रिंट अगर हार्ड कॉपी लेनी है तो प्रिंटर के थ्रू ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। और ये जो है एक तरह से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और जो कंट्रोल यूनिट है हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। और स्टोरेज यूनिट में मैंने आपको रैम रोम वगैरह ये चीज़ें सारी बताई हैं। अगर आपको इनके रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको डाल डाल दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे देना कि हाँ भी हमें इसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। मशीन इंस्ट्रक्शंस में भी हमारे पास 5 टाइप्स की मशीन इंस्ट्रक्शंस होती है। फर्स्ट होती है सीपीयू के अंदर ऑपरेशन स्टोरेज, सेकंड कहाँ पर ऑपरेशन लोकेशंस है, थर्ड नंबर ऑफ एक्सप्लिसिट ऑपरेंड्स पर इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होने, किस टाइप और साइज का ऑपरेंड होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम मैंने बताया आपको मशीन टाइप के बारे में, जिसमें स्टैक, अकमुलेटर, सेट ऑफ रजिस्टर के बारे में बताया। और स्टैक में ये बताया कि जो स्टैक की टॉप पर जो वैल्यू ऑपरेंड्स है वो इम्प्लिसिटली उसमें जाएंगे। एकमुलेटर में सिंगल एक ऑपरेंड ही एकमुलेटर में इम्प्लिसिटली इंसर्ट होगा। सेट ऑफ रजिस्टर में सारे ऑपरेंड्स जो है एक्सप्लिसिटली या तो रजिस्टर में जाएंगे या मेमोरी लोकेशंस में। सारी मशीन्स जो हैं वो जनरल पर्पस आर्किटेक्चर को यूज करती हैं। क्यों यूज करती है? क्योंकि ये फास्टर होती है, मेमोरी से इजियर होती है कंपाइलर टू यूज, और यूज की जाती है मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया कि स्टैक जो है सिंपल मॉडल है ऑफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का, गुड कोड डेंसिटी प्रोवाइड करता है, कम्युलेटर मिनिमाइज करता है इंटरनल स्टेट को ऑफ मशीन, और शॉर्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर जो है मोस्ट जनरल मॉडल है फॉर कोड जनरेशन के लिए। डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टैक जो है कांट रैंडमली एक्सेस और डिफिकल्ट टू जनरेट एफिशिएंट कोड। और जो हमारा कम्युलेटर है उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये टेम्पररी स्टोरेज यूज करता है, मेमोरी ट्रैफिक इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो हमारा रजिस्टर है इसमें सारे ऑपरेंड्स जो है वो नेम्ड, वो लॉन्गर इंस्ट्रक्शंस को लीड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लासिफिकेशन और जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वेदर एएलयू इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें 2 या 3 ऑपरेंड्स हो, चाहे मतलब 2 और 3 ऑपरेंड्स हो, हम कैसे इसको लिखेंगे, ऐड लिखेंगे। ऐड लिखने के बाद हमने R3 R1 R2 लिखा है। R3 हमने पहले लिखना है, क्यों लिखना है? R3 में हमने आउटपुट लेनी है, और जो इनपुट वाले रजिस्टर होंगे उनको बाद में लिखेंगे। R1 प्लस R2 करके हमने उसको किस में डाला? R3 में, और इसके लिए रिवर्स वाला एरो सिंबल यूज होता है। हाउ मेनी ऑफ द ऑपरेंड्स में बी मेमोरी एड्रेस इन एएलयू इंस्ट्रक्शन? एएलयू इंस्ट्रक्शन में कितने मेमोरी जो एड्रेस्ड ऑपरेंड्स होंगे उसके बारे में आगे डिस्कस किया है। फर्स्ट हमारे पास हम इसमें मैंने ये बताया कि हम रजिस्टर टू रजिस्टर भी कर सकते हैं ऑपरेंड्स को ऐड और मूव वगैरह। रजिस्टर टू मेमोरी कर सकते हैं और मेमोरी टू मेमोरी कर सकते हैं। रजिस्टर टू रजिस्टर करना है उसका वे यही है कि पहले आउटपुट वाला रजिस्टर लिखो, फिर उसके बाद इनपुट वाला रजिस्टर। दोनों में हमने इनपुट ली और उसको किस में डाल दिया? R3 में डाल दिया ऐड करने के बाद। जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आगे लिखना होता है यहाँ पर। रजिस्टर टू मेमोरी का मतलब है कि आपने एक ऑपरेंड ए लिया, उसको किस में डाल दिया? रजिस्टर ए में प्लस करके डाल दिया, और फिर उसके बाद जो है उसकी आउटपुट किस में आ गई? R1 में आ गई। एक ही रजिस्टर यूज हुआ। मेमोरी टू मेमोरी का मतलब देयर इज नो रजिस्टर। इसमें आप क्या कर रहे हो? आपने इसमें 3 ऑपरेंड्स ले लिए, ए सी ए बी। ए बी में आपने वैल्यूज को डाला, उसको ऐड किया और किस में रख दिया? उसको भेज दिया सी ऑपरेंड के अंदर। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस के बारे में बताया। 0 एड्रेस में आपके पास इंटरनल स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें आप वैल्यूज को पुश करते जाते हो, स्टैक में करते हो वैल्यूज को पुश, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया। और अगर आप कोई वैल्यू एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप टॉप से उठाओगे उस एलिमेंट्स को। और पॉप में मैंने ये बताया आपको कि कैसे पॉप वैल्यूज को कैसे बाहर निकालते हैं स्टैक में से। जो टॉप मोस्ट होएगी वही वैल्यू पहले निकलेगी यहाँ से, जैसे मैंने ये निकाल के दिखा दी। ये आपके पॉप एलिमेंट है। अगर आप पुश करना चाहते हो तो आपने इससे स्टैक के अंदर इंसर्ट करना होता है।
फिर मैंने आपको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, वन रजिस्टर वन मेमोरी होती है, अदर जो कि वन मेमोरी वन रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर और मेमोरी में जाती है, वन बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, मूव जैसे कमांड यूज होती है इसके लिए। और ए एल यू इंस्ट्रक्शन वन बाइट इंस्ट्रक्शन ही है, इसमें भी हम ऐड सब और ए एंड ए इन आर डी डी सी आर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में टू बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें फर्स्ट बाइट ओपी कोड के लिए ऑपरेशन कोड के लिए यूज होता है, सेकंड जो बाइट है वो या तो डेटा के लिए या एड्रेस के लिए यूज होता है। और लाइक एम बी आई बी 05 लिखा है, 05 इज द वैल्यू जो कि आपकी बी रजिस्टर में जाएगी, मूव हो रही है। और इसमें हम आई एन 01 रीड डेटा एट पोर्ट बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि 01 जो वैल्यू है वो किसके ऊपर जा रही है, पोर्ट बी यानी कि रजिस्टर में जा रही है। और हम इसमें आई यूज करेंगे, एम बी आई, ए डी आई, ए एन आई, ओ आर आई, लेकिन हम एल एक्स आई इंस्ट्रक्शन जो है वो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं यूज करते हैं, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में इसको यूज करेंगे। 16 बिट डेटा यूज होता है, 16 बिट मेमोरी एड्रेस होता है, जिसे हम थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल एक्स आई एच कोमा 2400H लिखा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर एच से एल पेयर जो है वो 2400H के साथ लोड कर रहे हो। एल डी ए का मतलब है 2500H, गेट द कंटेंट ऑफ मेमोरी 2500H इंटू एकमुलेटर में आप उसको गेट कर रहे हो। ए यहाँ पर एकमुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इस तरह आपने जो है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को भी सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आगे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस करूंगी, कौन कौन से होते हैं, फिर कॉमन एड्रेसिंग मोड्स कौन से यूज होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डीएलएक्स आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्लासेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएलएक्स क्या होता है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं, ये मैं कमिंग वीडियोस में सारा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को भी डिटेल में डिस्कस करूंगी, कैसे कैसे इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देन उसके बाद सीपीयू कंट्रोल यूनिट के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगी। टर्म्स इन मेमोरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में, डिफरेंसेस क्या है, मेमोरी आर्किटेक्चर इंटरफेस क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, कंडीशंस फॉर स्टॉल्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कैशे और मेन मेमोरी क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करूंगी। प्लस फिर मैं इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सारे आपके कमिंग वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। और एमसीक्यू जो आपके गेट के पेपर में, यूजीसी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आएंगे, वो सारे आपके साथ डिस्कस डिटेल में करूंगी। ठीक है, तो आपने ये वीडियोस जो है आपने ध्यान से इनको दोबारा सुनना है, देखो सुनो और समझो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।